close till I get up. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this room. Assalamualaikum guys, this is Lamyaa and welcome back to my YouTube channel. I hope आप लोग सब ठीक होंगे and if you are watching my video for the first time, so please make sure करें आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें. सो आज की जो वीडियो है गाइस, इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी स्पेशल बिकॉज मैं जा रही हूँ बेबी शावर पे एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर माई सिस्टर. एंड हमने उनका जो बेबी शावर है वो प्लान किया है. उनकी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी साथ मिलकर किया है. सो बेसिकली ये हम कर रहे हैं बाहर कहीं रेस्टोरेंट पे. हमने पहले सोचा था कि हम घर पे करेंगे बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था. सो अभी मैं ऑल सेट हूँ जाने के लिए. तो जगह है और बाकी सारी चीज़ें वो मैं आपको रास्ते में बताती हूँ. सो अब हम गाड़ी में हैं एंड अब मैं जा रही हूँ. सो जो वेन्यू है वो बेसिकली है अल इब्राहिमी प्लेस एंड वहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने छोटा सा इवेंट किया है. सो जैसे मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ तो मैं आपको और सो ये जो रेस्टोरेंट था यहाँ पर हम पहुँच गए थे एंड यहाँ पर बेसिकली उनके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो पहले आ गए थे बिकॉज वी वांटेड टू डेकोरेट दिस प्लेस बिफोर शी अराइव्स. तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी जो चीज़ें थी डेकोरेशन की वो हम लेकर आए थे साथ में एंड वी जस्ट बुक दिस बेसिकली टेबल. एंड यहाँ पर ये इस तरह का एरिया था कि हम ईज़िली हर तरह की डेकोरेशन कर सकते थे. And all these things which you can see over here, they were all handmade and this was basically done by my sister's friends. And जितने भी उनके friends थे उन सब ने मिल के ये सारी decoration की थी. And this cake was like really yummy. And ये एक gifts hamper type बनाया था and it was really beautiful. आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें थी सारी. So ये basically अभी हम यहाँ पर decoration वगैरह कर रहे थे. इस पूरे part को हमने सजाना था with balloons and these like props which we had. So yeah, basically these were also handmade and it was very nice. So all the preparations were done and here comes the mom to be over here and before she comes everything was like all set और जो सारी preparations थी वो हो चुकी थी. So over here she was just getting ready, although इनका मेकअप और सारी चीज़ें थी वो हो चुकी थी but she was just getting ready to take some pictures and she wore this beautiful gown which was like in sea green color because we weren't sure about the gender and इसीलिए हमने इसको बहुत एक neutral color रखा था. So after she arrived, after taking some pictures, so we decided to cut the cake first and later on we can have lunch. So यहाँ पर we were just getting ready to cut the cake.
4 clips him of that day, and here we were cutting the cake, and plus मुझे बहुत ज़्यादा time लग गया था to edit this video. The reason was because I was not supposed to reveal anyone's face over here because यहाँ पर उसके सारे friends available थे, not and everyone likes to be on social media. So इसीलिए मुझे इसको edit करने में बहुत ज़्यादा time लगा. So now after the cake cutting ceremony we were heading to have lunch, and जो lunch था यहाँ पे बहुत ज़्यादा awesome था. It was like a buffet, and इनका जो taste था it was like really amazing. Like everything was there, veg was there, beef, mutton, everything was there. कोई ऐसा item नहीं आपको था कि ना मिले. Okay guys, so that's it for now, and I'm done for the day. And जो event था वो बहुत amazing रहा, and I tried to show each and everything. और जो भी चीज़ें थी यहाँ पे, हमने जितनी भी चीज़ें थी खुद हैंडमेड थी, खुद बनाई थी. तो बहुत ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल भी ऐसा इस तरह से पड़ जाता है जो आप इवेंट कोई भी अरेंज करना चाहो, चाहे वो ब्राइडल शावर हो, बेबी शावर हो, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा जेस्चर हो जाता है जिसके लिए आप करना चाहते हैं. So guys, for now I'm ending this vlog, and if you really enjoyed watching this video, so please give it a big thumbs up, and if you're new to the channel, so please make sure you subscribe my channel, and I will see you in my next video. So till then, please take care of yourself and others around you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading